we have now got the results of the second Sero survey for SARS-CoV-2 infection. So now, what is a Sero survey? Blood samples collected from general population are tested for IgG antibodies. Now, if a person has IgG antibodies positive, it means they have got exposed to SARS-CoV-2 at some time in the past. Now, how much time in the past is still work in progress. We are still learning. It's only a 9-month-old virus. So how long the antibodies persist still remains a question, but they start appearing after 2-3 weeks and then continue to be there for a few months. Now, Sero surveys are supposed to answer several questions. What is the percentage of the general population has been exposed? What age group has been exposed? And what are the areas where we need to become alert from the public health perspective in terms of containment measures, in terms of identifying where there is the higher prevalence, so we need to be more active. Next, please. So the first Sero survey was conducted in May 11 to June 4, 2020 in 700 villages, wards from 70 Indian districts. And this was conducted among adults more than 18 years. And overall prevalence of infection was found to be 0.73%. And you can see the confidence intervals are written there. Next, please. The second survey was slightly changed in the sense that we thought that younger individuals are also getting affected. So we said that we will estimate the prevalence among individuals above 10 years of age, not 18, above 10 years of age. And that the survey was conducted in the same 700 villages, wards in urban from 70 districts and 21 states, the same which were covered. Obviously the households were different, individuals were different, but the districts were the same. And this was conducted from August 17th to September 22, 2020. And you collected the socio-demographic detail, the history of respiratory symptoms. We took a written informed consent and ethics clearance was taken, and 3 to 5 ml of blood was drawn from these individuals, and the blood was tested for Ig antibodies using the IgG assay. Next, please. So 29,082 individuals were studied, and the prevalence in individuals above the age of 10 years was 6.6%. So from 0.73% it has gone down up to 6.6%, and the prevalence is not different by age group or gender. However, we clearly found that the urban slums were 15.6%, and urban non-slum was 8.2%, whilst the rural areas were 4.4%. And the prevalence, if we just compare with the adults more than 18, if we compare that from 0.73%, it has now become 7.1%, the prevalence. So what is very clear from this second Sero survey is typically one Sero survey is not good to answer any question. You have to do serial Sero surveys in the similar districts to find out what is happening. And so this clearly shows that the lockdown and containment measures as well as behavior change at the population level has contributed and checked the spread of SARS-CoV-2. However, a large percentage of the population is still unexposed, and susceptibility to getting SARS-CoV-2 exists, is real, and therefore we have to continue with our measures which the Health Secretary has pointed out. Risk in urban slums is twice that of non-slum areas and 4 times that of rural setting. And 26 to 32 infections were reported per case diagnosed in August, as against 81 to 130 in May, which underlines that the tracking and treating strategy has been implemented tremendously. Thank you. Now, this is a comparison of what some Sero surveys are available in the country from Delhi, Bombay, Ahmedabad, Chennai, Puducherry, Indore, and we can see the Delhi within the last 3 months. Sero survey has been done in July, August, also in September, and it is not increasing much. It is 23.5 or 24% to 29%, and the last one is saying that it was about 32 to 33%. Ahmedabad is 17%, Puducherry is 4.9, gone up to 22, Indore is 7.8%. Next, please.
And if you look at the international figures also, the latest one has come out from the US, which is still under 10%. It remains at 9.3%. Spain is 4.6%. United Kingdom is about 6.9%. And the highest is probably in Iran, which is 22% at the moment in terms of the country prevalence. Rest of them all are below. So the main conclusions from this Sero survey are that 1 in 15 individuals aged more than 10 have been exposed to SARS-CoV by August. Seroprevalence was not different by age or by gender. So it does not, all age groups above 10, we have found that it is there. Earlier we were under the impression that below 18 it does not affect, but we found now that there is no difference. Risk gradient is more, urban slum is highest, that is 15.6%, compared to urban non-slum, that is 7.6%, compared to rural areas, which is about 4%. And though, as I already stressed, that the increase in testing and detection has occurred. Now, since the last point here I want to emphasize is very important, since a large proportion of the population is yet susceptible, prevention fatigue has to be avoided, and we have to stick or adhere to our 5T strategy, which is test, track, trace, treat, and use of technology, which is Arogya Setu or Itihas app have to be used. And the non-pharmacological interventions like physical distancing, use of mask, hand hygiene, cough etiquette are still essential and continue to remain essential. Even after the vaccine has come, these will still continue to remain essential. And people-centric and risk-focused interventions have to be done more in urban slums, then urban non-slums, and then in rural settings. And as has earlier been pointed out, that elderly individuals with comorbidities, pregnant women and children have to be protected. And more important, the last point is that in light of the upcoming festivities, in light of the winter season and mass gathering, containment strategies must be implemented by the states most effectively, and the use of mask cannot be underlined more than after this Sero survey, that it is very, very essential, that a large population still remains susceptible, and we need to continue with these preventive measures. जो मेजर्स लिए गए, उन मेजर्स को अपनाते हुए देश ने इस पेंडेमिक को बहुत हद तक कंट्रोल में रखा है, मोर्टेलिटी को कंट्रोल में रखा है, लाइफ चल रही है, अनलॉक हुए हैं सक्सेसफुल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल पड़ी हैं बहुत हद तक, और उसके बावजूद भी इस पेंडेमिक को इस लेवल पे रखा है कि जो कि संभली हुई है। तो एक हिस्सा ये है जिसके लिए कि हम सब अपने आप को भाग्यशाली भी मान सकते हैं और हमारी लीडरशिप और पीपल ऑफ इंडिया को इसका क्रेडिट देते हैं। दूसरी साइड से ये भी दिखाई देता है कि अभी भी 90% के लगभग या उससे भी ज़्यादा हम सब जो हैं इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं, हम ससेप्टिबल हैं, हमारे वास्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी ससेप्टिबल टू दिस वायरस है, ये रिस्क हम पर बना हुआ है। इस रिस्क को हमने समझने का और फेस करने का भी एक्सपीरियंस खूब गेन कर लिया है, और हम जानते हैं कि इसकी जो साइंटिफिक अप्रोच है, अपने आप को बचाने की अप्रोच है, सर्वेलेंस और कंटेनमेंट की अप्रोच है, उसके बाद में जो टेस्टिंग से हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को ढूंढते हैं, जो बीमार होता है उसको पकड़ते हैं। तो ये जब सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को हम आके लेके चलते हैं, तो हमें ये भी लगता है कि आगे हम ससेप्टेबल हैं, लेकिन हम इसको संभल सकते हैं, बचा सकते हैं, ये भी हमारे सामने आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी वायरस को कंटेन करने की, सप्रेस करने की सिस्टमैटिकली ली गई, जिसमें कि लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसे वक्त पे किया गया है जबकि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल राइज हो रही थी और भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि इसका पीक जो है जून तक आ जाएगा और करोड़ों लोग अफेक्ट हो जाएंगे। उस स्टेट में कि जब हमारी प्रिपरेशन एक और तरह की थी, हमारी तैयारी एक और तरह की थी, और उससे बचते कंट्रोल में रखते आज हम 9 महीने इस पेंडेमिक में पहुँचे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया है उसका बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट आपके सामने है कि हम 7% के करीब एडल्ट्स में अभी तक आई है ये पेंडेमिक।
90% से ज़्यादा अभी भी ससेप्टेबल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, कि आगे जो विंटर का महीना आएगा, ये लगता है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस इसमें खुश रहते हैं और अपना प्रकोप ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये एक मानी हुई चीज़ है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये बीमारियां सर्दी की बीमारियां हैं, हम बचपन से जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अगले 3, 4, 5 महीने आ रहे हैं, इसमें हमें अपनी ताकत पूरी लगानी है कि ये पेंडेमिक जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होना दिखना शुरू हुआ है, उसको रुके और नीचे की तरफ आए। डिक्लाइन इसमें आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भागीदारी है हम सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने कंटेनमेंट करना, सर्वेलेंस करना, टेस्टिंग की व्यवस्था बनाना, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बनाना, अपने आप को कॉर्डन ऑफ करना, एजुकेट करना, वो सब हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम सब की जो अल्टीमेट जिम्मेवारी आती है, इन्फेक्शन ने तो मुझे ही एज एन इंडिविजुअल पकड़ना है, तो उसमें मेरा क्या रोल है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि उसको क्या हम सारे अपना सकते हैं। 2 गज की दूरी की बात हो, 100% मास्क की बात हो, ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है इस माहौल की वजह से, विंटर के महीने की वजह से, आने वाले त्योहारों की वजह से, और उसके साथ जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे हमें जो पूरी तरह से सजग रहने की शिक्षा मिलती है। तो उसको लेके हमें ये पॉजिटिव जो हमारे सोशल वैक्सीन को अपनाना है, जैसे राजेश भूषण जी हमेशा कहते हैं, अपने आप को बचाना है, कोविड से बिहेवियर लाना है, उसकी जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते बहुत ज़ोरों से हमने एम्फेसाइज़ किया था कि हम सब मास्क अपनाएंगे, 100% मास्क अपनाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दूरी भी दूसरों के ऊपर भी निर्भर करती है। लेकिन मास्क तो मेरे अपने हाथ में है, अल्टीमेटली तो वायरस ने इसी रास्ते से जाना है। इसलिए हम फिर आज दोबारा अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि हम 100% मास्क अपनाएंगे, 2 गज की दूरी को अपनाएंगे, हम हाथ की सफाई, हाथ को साफ रखना, थूकना नहीं है, इन चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे। और जो आने वाला वक्त आ रहा है उसमें मास्क वाली पूजा इस बारी होगी, मास्क वाली छठ का फेस्टिवल होगा, मास्क वाली ईद होगी, मास्क वाला दशहरा होगा, मास्क वाली दिवाली होगी। ये हम सबके हित में है। इस बात को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और जो आज साइंटिफिक बेसिस हमने दिया है, ये क्लियर कर देता है कि हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है 90%, 1 आउट ऑफ 9 अभी भी हम ससेप्टेबल है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खतरा है